Welcome back, everyone, and what a match we just witnessed at Chinnaswamy Stadium. Lucknow Super Giants won the match in the final ball of the innings of the second innings in by just one wicket. I have Pratik with me and Nikesh with me. Nikesh is of course supporting Lucknow Super Giants, while Pratik, you're on the losing cause tonight. Nevertheless, what a match! You expect this kind of a match at Chinnaswamy. I'll first come to Nikesh. Nikesh, how nervous were you in the last few overs? Very, very nervous. I The match could have gone either way, and everyone in the office was just uh, sitting there and watching the match and not knowing which side it would eventually go on. But yeah, I'm really happy that it went on to Lucknow's side. And Pratik, another match, and again RCB failed to defend a huge total. They had everything they need this time. They got early wickets. They got KL Rahul out very early, not very early in the 12th over, but he couldn't do much damage. Again, Kyle Mayers had to go pretty early, but yet again RCB failed to defend a huge total on board. What do you have to say about that? I think what I can say is RCB teaches their fans life lessons, to actually grow some thick skin, and bear with these kind of close shaves because, over the last, I don't know, 15 years and more, what we have seen is RCB lose matches time and again when they should have actually won the match. At the halfway mark, I would have thought, okay, yeah, that's a really good total given the start they had. But in the end, I have to say, I grew a year older after watching this match because at one point RCB should have won. It looked that way, and after some time, the way LSG, especially after LSG start, I mean Siraj and Wayne Parnell, they were going all guns blazing, and after that, RCB pulled it back. They got a few wickets. I'm sorry, with Nicholas Pooran and Stoinis, they pulled it back LSG, and it looked like LSG were cruising. But then it looked from a very easy equation, it looked like okay, yeah, RCB might just have an outside chance. It went to the very last ball, and RCB, of course, lost again. It's just in the fabric of the cricket team, the franchise here to lose close games, so I'm not surprised. चलिए अब जल्दी से मैच समरी देख लेते हैं कौन कितना अच्छा खेला है। बैटिंग फर्स्ट रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने 212 रन की टोटल बोर्ड पे लगाए थे। डुप्लेसिस ने बहुत बढ़िया इनिंग्स खेला था, 79 रन बनाए। विराट कोहली ने 61 रन बनाए। अमित मिश्रा ने एक विकेट लिया था। मार्क वुड ने बहुत बढ़िया बॉलिंग किया। एक ओवर में लगातार 6 बॉलें 150 प्लस डाला था। एक विकेट लिया है मार्क वुड ने। अब लखनऊ सुपर जायंट्स ने चेस कर दिया था फाइनल बॉल में, और मार्कस स्टॉइनिस ने एक बहुत बढ़िया इनिंग्स खेला था, 65 रन्स ऑफ 30 balls. While Nicholas Pooran scored 62 runs of just 19 balls. Siraj gave a great start with a new ball, 3 wickets. Parnell with 2 back-to-back wickets. He picked up a total of 3 wickets, and again, what a match! Uh, I'll come back to you, Nikesh. Marcus Stoinis and Nicholas Pooran again played probably changed the complexion of the game after the initial struggles. What do you have to say about Marcus Stoinis in special? Because if he wouldn't have played that knock, probably Lucknow wouldn't have come even closer to the target. बिल्कुल बिल्कुल हम बात कर रहे थे एसआरएच वाले मैच में कि एसआरएच इतने सारे प्रॉब्लम्स के थ्रू क्यों जा रही है, क्योंकि वो अपने प्लेयर्स को लॉन्ग रोप नहीं दे रहे हैं और चॉपिंग्स एंड चेंजिंग्स करते जा रहे हैं हर मैच में। और लखनऊ जो कि स्टोइनिस के साथ बरकरार है डिस्पाइट हिम नॉट बीइंग इन फॉर्म, आई थिंक आई मेड दिस पॉइंट इन द प्री मैच दैट they are giving him a long rope and eventually he would turn out to be a good contributor to the team, and वो वैसा ही हुआ exactly बिल्कुल इस मैच में। बिल्कुल उन्होंने पलट दिया बिल्कुल मैच का पासा जो था स्टार्टिंग में, और 65 of 30 with 6 fours 5 sixes, 216 का स्ट्राइक रेट। सो हाँ बिल्कुल अब वो इनफॉर्म है, इवेंचुअली आ गए हैं, और नेक्स्ट मैच से वो काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेंगे लखनऊ के लिए। और पूरन तो हाँ, पूरन ने फास्टेस्ट हाफ सेंचुरी लगा के बिल्कुल ही मैच खत्म कर दिया। वो अगर होते तो मैच पहले ही खत्म हो जाता। और तो हाँ, मैं बहुत खुश हूँ आज और रेडी हूँ आईपीएल के लिए बिल्कुल। Pratik, Virat Kohli and Faf du Plessis, we have to talk about them. Again, gave a very good start to Royal Challengers Bangalore. They were cruising in the initial overs.
but somehow Virat Kohli once again failed to make it big. The problem that we are seeing in Virat Kohli right now, of course, he played an amazing innings, great and all that. But keeping that aside, how do you rate Virat Kohli's this innings? Should he have stayed in the crease much longer? Because again, he's not being able to convert his starts into a big total. Yeah, I think Virat Kohli started really well. He was timing the ball really well, and in the opening partnership between Kohli and Duplessis, it was clearly Kohli playing the aggressor's role and Duplessis was playing the anchor's role. But I think Duplessis was consuming too many balls at the start, and that probably put a little more pressure on Kohli. But I think that could be the reason why once Amit Mishra came into the attack, he thought, okay, yeah, maybe he is the bowler I can take on and get a move on for the team. But I have to say, from the looks of it, I might be completely wrong. I'm not much of a body language expert, but I, along with some others, thought that as soon as he saw the veteran spinner or the youngster, as some commentators call him, Amit Mishra, when he came into the attack, the body language was a little appalling, I must say, because from the get go, from the very first ball, he tried to be very positive, tried to play very expansive shot, not taking the measure of the bowler, not really taking some time before actually playing the ball. He was not playing to the merit of the ball. He was just under the bias that he's the bowler he can take on, and I think he paid the price for it. In the end, it was a bit of a stop-start innings for Virat Kohli because at the stroke of 50, he took a few balls, and in the end, it did not quite look like a blistering, explosive innings given the start he had. I believe, like you yourself said, or mentioned in the question, I think he should have stayed much longer. And if you ask me why, I think it's simply because he did not take measure of how good Amit Mishra could have been. He just tried to be positive right from the get-go without really taking the measure. राइट और इसी के साथ फर्स्ट इनिंग्स का हम लोग ग्राफिक्स देख लेंगे। फर्स्ट इनिंग्स में क्या हुआ है? फर्स्ट इनिंग्स का टॉप परफॉर्मेंस है फैब डुप्लेसिस, ऑफ कोर्स 79 रन्स ऑफ 46 डिलीवरीज, while विराट कोहली स्कोर्ड 61 रन्स ऑफ 44 डिलीवरीज। प्रतीक, आई कम टू यू अगेन। अच्छा, सेकंड इनिंग्स का टॉप परफॉर्मर भी हम लोगों के पास रेडी है। सेकंड इनिंग्स में मार्कस स्टोइनिस ने 65 रन्स ऑफ 30 डिलीवरीज, while मोहम्मद सिराज was again brilliant with the new ball, 3 wickets of giving away just 22 runs in his 4 overs. शायद लास्ट में भी उन्होंने बहुत ज्यादा कोशिश किया था कि मैच में आरसीबी को वापस ले आए। कहीं ना कहीं एक टाइम पे लग भी रहा था कि आरसीबी जीत जाएगा, निकोलस पुरन और अर्शदीप धोनी जब आउट हुआ था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली फाइनल ओवर में सिंगल लेते हुए जीत गए थे लखनऊ। Pratik, I'll come back to you. What do you have to say about Duplessis' innings? Again, he's leading from the front. Maxwell played a really good innings today. In general, do you see RCB playing great again with the bat? Like, do you think if they can manage to play this kind of cricket, even though they lost 2 out of their last 3 matches, they can qualify for the playoffs? Answering your first question about Duplessis innings, I think my assessment is that he played the perfect innings. He was the anchor when there was an aggressor in place, which was Virat Kohli, and then he actually got a move on. He upped the ante, and he, along with Maxwell, really got going together. I think it was a very well-paced innings. It's a top-class innings. Initially, it was all about just trying to hang in there, negotiate, and rotate strike. In fact, I wrote it somewhere, and in the office, as I usually write. He went from being the anchor to the aggressor to the finisher. I think that is a top quality innings, and I know people like Harsha Vogle and a few others are often debating about the anchor's role in T20 cricket at all. Is it really needed? When there is just 20 overs to play, shouldn't you just go bang bang right from the word go until the end? Because you don't really need anchor. But I think you do need anchor. There is no reason. You will look brilliant when it works. When you go bang bang, when everyone goes bang bang right from word go. When you do that, there is a good possibility you can get all out very early as well if things don't go well. I think it was a very well-paced innings by Duplessis. And answering your second part of the question, on this kind of a wicket,
we saw that RCB has a great batting lineup to actually exploit that, despite having a few absentees. We also saw that they have a very underprepared bowling lineup for this surface. So I'm not too sure if I should be happy or sad about it. But yeah, they definitely have a few things to address when it comes to the bowling department. Are you still optimistic that RCB can qualify for the playoffs? Oh yeah, that's the third question. Yeah, of course I am. I wouldn't call myself a fan if I don't believe in that. Uh, Nikesh, I'll have to come back to you. We'll have to talk about KL Rahul, like chasing 200 plus runs, scoring just 18 runs of just 20 balls. कहाँ गड़बड़ हो रहा है, क्योंकि बहुत टाइम से हम देख रहे हैं कि केएल राहुल अपने अंदाज में है नहीं। कहाँ प्रॉब्लम कहाँ हो रहा है? आपको क्या लगता है कि कैसे वो बाहर आ सकते हैं, और क्या करना चाहिए अभी? आई थिंक प्रॉब्लम कहीं नहीं है, उनके पास काफी अग्रेसिव बैटर्स हैं उनके लाइनअप में। आई थिंक केएल राहुल अफोर्ड कर सकते हैं एंकर रोल प्ले करना। और वही बात है, अगर ये वर्क करता है तो काफी ब्रिलियंट लगता है, बट जब वर्क नहीं करता है जैसे इनके साथ हो रहा है अभी कुछ मैचेस में, तो काफी क्वेश्चंस आते हैं। बट आई डोंट थिंक कि लखनऊ को और केएल राहुल को ज्यादा सोचना चाहिए इसके बारे में। आई मीन वो 3 मैच जीत चुके हैं डिस्पाइट केएल राहुल नॉट परफॉर्मिंग वेल। तो अगर वो, आई थिंक वो कंटिन्यू करना चाहिए उन्हें, अपना जो भी गेम है, जो एंकर रोल वो आई थिंक प्ले करना चाहते हैं वो कंटिन्यू करें। कुछ मैचेस में उनका फॉर्म जरूर वापस आ जाएगा और उसके बाद फिर हमें ये बात करने की जरूरत नहीं होगी। और दर्शकों को बता दिया जाए कि ये आईपीएल की हिस्ट्री में 4th हाईएस्ट रन चेज है। पहली बार राजस्थान रॉयल्स ने किया था 224 चेस किया था पंजाब किंग्स के अगेंस्ट 2020 में। और मुंबई ने सिमिलरली एक चेन्नई के अगेंस्ट किया था, और अब एलएसजी ने बैंगलोर के अगेंस्ट किया है, और एलएसजी ने सीएसके के अगेंस्ट भी किया, मुंबई के अगेंस्ट भी किया था, सीएसके के अगेंस्ट किया था मुंबई में 2022 में। तो शायद एलएसजी का ये अभी हैबिट भी बन गया कि कुछ भी टारगेट हो हम तो अपने अंदाज से खेलेंगे। और इस अंदाज के बिल्कुल बिल्कुल। खेलने का आई थिंक मेरे जबान में अभी ये एक सवाल आता है कि काइल मेयर्स बहुत अच्छा स्टार्ट दिया था आईपीएल में, बट लगातार 2 इनिंग्स में वो उन्होंने कुछ अच्छा खास कर नहीं पाया। आई थिंक कोई भी अगर फ्रेंचाइजी होता तो फिर शायद ड्रॉप करने का सोचता भी नहीं, क्योंकि अगेन 1-2 मैच हर किसी का खराब जा सकते हैं। हमने देखा कि केएल राहुल का 3 मैच 4 मैच लगातार खराब जा रहा है। लेकिन आपके पास जब क्विंटन डिकॉक अवेलेबल है, तो क्या आप काइल मेयर्स को नेक्स्ट मैच ड्रॉप करने के लिए सोच सकेंगे? आई थिंक वो सोच रहे होंगे। आई थिंक उनका डिलेमा ऑलरेडी ये चल रहा है, गौतम गंभीर और विजय दहिया और जितने भी उनके कोचिंग स्टाफ में लोग हैं। बट जैसा कि हम देख रहे हैं, स्टॉइनिस को 4 मैच मिला और वो फॉर्म में वापस आ गए हैं। तो काइल मेयर्स को भी आई थिंक जिस तरह का लखनऊ का पास ट्रैक रहा है, आई थिंक वो और मैचेस देंगे और वो चाहेंगे कि कंटिन्यू करें अपना जो फर्स्ट 2 मैचेस का उनका जो फॉर्म है। बट हाँ, ये मतलब इट्स अ गुड हेडेक टू हैव फॉर लखनऊ कि इतने प्लेयर्स हैं उनके पास अच्छे कि उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि किन्हें लें और किन्हें बिठाएं। बट आई थिंक काइल मेयर्स को वो अभी और चांस देंगे। Correct. And Pratik, 5th time in history RCB failed to defend 200 plus score. I think this time they of course had injury concerns with Reece Topley going out and others going out. But then again, you have a very decent bowling lineup. Mohammad Siraj and Ven Parnell gave a great start with the new ball. But somehow this is not happening. Again, Chinnaswamy, RCB, 200 plus runs. They are not being able to defend. Uh, what do you think ki RCB have to do right now to improve? Because they have the quality, I believe. They definitely have the quality. I mean, when you look at bowlers like Mohammad Siraj and Wayne Parnell as he performed today, and with top bowlers like Josh Hazelwood and Reece Topley waiting in the ranks, especially Hazelwood, and a few others as well. Harshal Patel, we know what he can do when he gets going. Of course, he has been on a bit of a slump ever since he sustained um, a webbing injury on his palm after IPL 2022. Ever since he came back, he has not quite been the same for India and for RCB now. He eventually got dropped from the national team as well. So all in all, they definitely have quality. All these players, when they are in their prime, they are great bowlers. Having said that, since IPL 2022, RCB has the worst
economy rate for the final 5 overs of an innings for any IPL team, which is not great showing for a top quality bowling lineup, or I must say, a bowling lineup that looks like that looks great on paper. What I can say is all these bowlers. If I were to talk about Siraj, he's a great bowler. He's absolutely uh, instrumental for India when it comes to tests, when it comes to ODIs. In T20s, he has shown glimpses, but he is yet to be consistent. And when we talk about other bowlers today, from today, Harshal Patel, he must really work on his slow ball. They're just not the same as it was. It's not as lethal as it was. Uh, I must say it's a little bit of a shame that some of his slow balls are more or less spies now to the batters. It's just a drag down to the leg side, and it's either too short or too full. When I say too full, they are just outright full tosses, which is just not great showing once again. So I'm not sure if that lengthy absence after IPL 2022 has affected his quality. I'm sure it has, but I hope he gets his rhythm back. And others today, I think Karan Sharma bowled. He has bowled better in the first 2 matches, so it was just one off day. Although I criticized Siraj early on, I think today he had a great game. I just think he didn't have much support from the other bowlers. So all in all, death overs is the main concern. राइट और निकेश, कल हमने देखा है कि रिंकू सिंह एक बहुत बढ़िया इनिंग्स खेला है और आज आयुष बदूनी ने काफी हद तक बहुत बढ़िया इनिंग्स खेला है और छक्का शायद लग गया था लेकिन अनफॉर्चुनेटली हिट विकेट हो गया। लेकिन अनकैप प्लेयर्स के लिए ये बहुत बड़ा मोटिवेशन भी हो सकता है कि आयुष बदूनी आज जैसे इम्पैक्ट प्लेयर होके आए थे और बहुत बढ़िया खेला। आई थिंक उनका भी बहुत बड़ा हाथ है एलएसजी का जीतने में। कैसे देखते हैं आप ये इम्पैक्ट प्लेयर्स, इंडियन डोमेस्टिक प्लेयर्स को स्पेशली कितना मदद कर रहा है? बिल्कुल बिल्कुल, इम्पैक्ट प्लेयर्स का बहुत बड़ा रोल रहेगा इस बार आईपीएल में। और जो अनकैप्ड प्लेयर्स हैं जैसे आयुष बदोनी जैसे, वो सारे टीम्स के लिए एक इनिंग में आके बॉलर हो या बैटर हो आके मैच को चेंज कर सकते हैं और शो कर सकते हैं कि उनके पास कैपेबिलिटी है फुल टाइम प्लेयर बनने का या इवन इंडिया टीम में आने का। बदोनी का बिल्कुल मैं उन्हें समझता हूँ, उन्होंने काफी अच्छा गेम खेला है आज। वो मतलब काफी रिस्क लेके नहीं खेल रहे थे। इवन जब निकलस पूरन आउट हुए उसके बाद भी सिंगल्स डबल खेल रहे थे, उसके बाद क्लोज ले जाने की कोशिश कर रहे थे बेसिकली। और उनका छक्का तो छक्का ही था ऑलमोस्ट, बट हाँ, बैट का फ्लो थोड़ा वैसा था कि वो हिट विकेट हो गए। बट बिल्कुल हाँ, ये अनकैप्ड प्लेयर्स के लिए इम्पैक्ट प्लेयर का जो रूल है इस साल वो काफी ज्यादा बेनिफिशियल होगा। Again, I'll come back to you, Pratik. Glenn Maxwell was not in form, was not looking good for the majority part of IPL 2023, but today he played a brilliant knock. I think, again, he played a huge role in helping Royal Challengers Bangalore put 200 plus runs on board. How happy are you to see him get back to his form, and how crucial he'll be coming in the coming matches? We have seen Glenn Maxwell come back strong in IPL seasons. Once he was released by Punjab Kings earlier, and RCB signed him. The first season that he had was absolutely brilliant. He was the one who carried RCB's middle order. And this season again, start of a new campaign, and he has already shown what the rest of the season looks like for him. And today, I think it was a special innings. They needed someone to just come in and just go bang bang right from the start, and he definitely did that today. I think it was a brilliant innings. At one stage, it looked like RCB might not get past 200 because they were just too much behind where they would have wanted at that stage, around 13 or 14 overs mark. But he came in, he scored a quick fire half century, really put them back on track. And in the end, he was one of the big reasons as to why they got to a very strong total, a total that they would have definitely taken at the start of the match. Great. And पीओटीएम के बाद हम डेफिनेटली करेंगे, लेकिन उससे पहले मेरे को जानना है कि निकेश, आपको क्या लगता है आज के मैच में प्लेयर ऑफ द मैच कौन है? क्या वो निकोलस पूरन है उनके इनिंग्स के लिए, या फिर मार्कस स्टॉइनिस है? जैसे उन्होंने खेला, पूरा मैच का हालत ही बदल दिया था।
आपके हिसाब से कौन है मैन ऑफ द मैच? आई थिंक निकोलस पूरन होने चाहिए मैन ऑफ द मैच, प्लेयर ऑफ द मैच, क्योंकि 326 का स्ट्राइक रेट है उनका। बेसिकली उन्होंने पूरा गेम चेंज कर दिया और लखनऊ के झोली में ला के डाल दिया मैच को। तो आई थिंक पूरन को होना चाहिए, बट हाँ, स्टॉइनिस का इनिंग भी इक्वली गुड था। Pratik, you have anything to say on this? It's a contest between Marcus Stoinis and Nicholas Pooran, but I think Nicholas Pooran just whips it because as good an innings as it was from Marcus Stoinis, I think Nicholas Pooran's innings was slightly on a higher level. Yeah, I mean, look at that, And 62 of of course, 19. Nicholas Pooran is what an inning, 62 runs of just 19 deliveries came and completely changed the game. जब उन्होंने आउट भी हुआ था तो काफी डिसअपॉइंटेड लग रहा था क्योंकि उनको मैच फिनिश करना था। निकेश, 16 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है निकोलस पुरन, आई थिंक 16 और 16.25 करोड़, बहुत ही ज्यादा पैसे देके लिया था। गंभीर बहुत खुश था ऑक्शन टेबल पे कि जब निकोलस पुरन ने फाइनली ज्वाइन किया था एलएसजी। अच्छा इन्वेस्टमेंट अभी तो लग रहा है, लेकिन कभी बिल्कुल भी लग जाता है। अभी आपके हिसाब से कैसा चल रहा है निकोलस पुरन और क्या एक्सपेक्ट करते हैं आगे आने वाले सीजन में, पूरा सीजन में? बिल्कुल, जब हम ऑक्शन जब देख रहे थे और टीम्स जब जा रही थी इनके पीछे और हम देख रहे थे प्राइस राइज करता हुआ, और हम सोच रहे थे कि आखिर क्यों क्यों मैंने बोला था टीम्स क्यों, इसको जब हम लोग लाइव कर रहे थे मैं हाँ। बोल दिया था कि बहुत अच्छा सीजन जा रहा है निकोलस पुरन का। शायद डेफिनेटली वर्ल्ड कप अच्छा दुबई, नहीं गया था, लेकिन हाँ टी10 लीग बहुत बढ़िया खेला था। आप लोगों ने बोला था टी10 लीग से कुछ नहीं होता, लेकिन आई थिंक होता है कुछ। बिल्कुल, दे नो समथिंग दैट वी डोंट, जो मैनेजमेंट है, टीम मैनेजमेंट। और बिल्कुल हम रिजल्ट देख रहे हैं अब कि क्या वर्थ है उनका एक्चुअली। 326 का स्ट्राइक रेट, फास्टेस्ट हाफ सेंचुरी ऑफ आईपीएल 2023, उन्होंने गेम बिल्कुल पलट दिया है। और जो कॉस्टली प्लेयर्स होते हैं बिल्कुल इसीलिए होते हैं, अगर सीरीज में वो आपको 3-4 मैच अकेले जिता दें तो वर्थ इट होता है उनका, जितना भी प्राइस दे के उनको लाया गया है। तो बिल्कुल मैं और सिमिलर काइंड ऑफ इनिंग एक्सपेक्ट करता हूं उनसे आईपीएल में, और देखते हैं क्या होता है। और जल्दी से अब हम लोग सोशल ट्रैकर की तरफ नजर देंगे कि दुनिया क्या बोल रहे इस मैच के बारे में। सोशल ट्रैकर में फर्स्ट ट्वीट है पुलकित का, टेक अ बाउ निकोलस पुरन, वी फॉल, वी ब्रेक, वी फेल, बट देन वी राइज, वी हील एंड वी ओवरकम। ऑफ कोर्स इंजरी के बाद एक बहुत बढ़िया उन्होंने रिटर्न दिया है, और आज के मैच के बाद तो बोलेंगे निकोलस पुरन के जय जय होगा हर जगह। नेक्स्ट ट्वीट देखेंगे, विंटेज आरसीबी इज बैक इन देयर ओल्ड फॉर्म। आई थिंक इस ट्वीट को प्रतीक, यू हैव समथिंग टू से? I think I've already spoken at the very start. I addressed this. This is vintage RCB. This is in the fabric of the franchise to lose close games, to lose winnable games, basically. So, yeah, I'm not surprised. As I've mentioned earlier, they teach us life lessons. आरसीबी प्लीज विन द ट्रॉफी फॉर फैंस। लाइशा ने ट्वीट किया है कि हमने देखा है कि फैन एक रो रही थी जब छक्का लगा था। आई थिंक अभी आदत हो गया आरसीबी वालों का कि लास्ट में जाके कहीं ना कहीं बॉलिंग अगर कर रहे हैं तो शायद डिफेंड ना कर पाए। नेक्स्ट ट्वीट देखेंगे हम लोग, 060046616146146416, 50 from just 15 deliveries, fastest in IPL 2023. Nicholas Pooran, take a bow. Indeed, take a bow. What a match, what an innings. And he changed the complexion of the match. विराज इन पावर प्ले, कैप्टन अभी विकेट लेके देता हूँ, 3 विकेट लिया है उन्होंने, और न्यू बॉल से बहुत बढ़िया खेला है, बॉल किया है सॉरी। जाते जाते हम एक बार पॉइंट्स टेबल भी देख लेंगे कि कैसा है, कैसा दिख रहा है अभी पॉइंट्स टेबल आईपीएल 2023 का। LSG with 3 wins in 4 matches at the top of the table. RR 2 wins in 3 matches, 4 points. KKR 2 wins in 3 matches, 4 points on the board. GT same, 3 matches, 2 wins, 4 points on the board. Chennai same, Punjab same. RCB meanwhile have won only 1 match in 3 matches. Things are not looking good for the Fabio Duplessis led side right now. Same with SRH, won just 1 match in 3 games. MI and DC are yet to open their account. Tomorrow they face each other. Hopefully, not hopefully, someone definitely will be on the scorecard.
with that, we have come to our end of our live show. Thank you everyone for joining us. For more such updates, news, and everything, keep following CricTracker on all the social media handles.